વાકશક્તિ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત રાજ્યની મુલાકાતે આવેલા 1008 જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી ગોધરા ખાતે રાત્રિ રોકાણ કર્યું, જ્યારે રવિવારે શહેરીજનોને દર્શન આપીને આગળના પ્રવાસ માટે અમદાવાદ તરફ પ્રસ્થાન કર્યું હતું। સમગ્ર દેશના લોકો સનાતન ધર્મને બચાવવા માટે ગૌમાતાનું રક્ષણ કરે તે માટેનું જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ આહ્વાન કર્યું હતું। ગોધરાથી મનોજ મારવાડીનો રિપોર્ટ। હાલમાં જ્યોતિષપીઠના 1008 જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી ગુજરાતના રાજ્યની મુલાકાતે છે। ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ શનિવારે ગોધરા શહેરના સાયન્સ કોલેજ રોડ પર આવેલ સદાશિવ સોસાયટીમાં રાત્રિ રોકાણ કર્યું। રાત્રિ રોકાણ બાદ રવિવારે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ શહેરીજનોને દર્શન આપ્યા હતા। ગોધરા શહેરમાં રોકાયેલ 1008 જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં જો સનાતન ધર્મની રક્ષા કરવી હશે તો સૌ પ્રથમ ગૌમાતાનું રક્ષણ કરવું પડશે। આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પણ હાલમાં ગૌમાતાનું કતલ થઈ રહ્યું છે, જે દેશના સનાતનીઓ માટે સૌથી મોટું કલંક છે। દેશમાં રામ આવી ગયા છે, પરંતુ ગૌ હત્યા અટકતી નથી। હાલમાં ગૌ માતાની પ્રતિષ્ઠાનું આંદોલન સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહ્યું છે। આ આંદોલન માટે ગોધરા માટે જવું જ પડે। આ જ ઉપલક્ષ્યમાં ગાયોની ધરતી એવા ગૌધરા એટલે ગોધરા માતે ખાતે ગૌ માતાની રક્ષા માટે ઉર્જા મેળવવા આવવું આવશ્યક હતું, જેથી જ મેં ગોધરાની શહેરની મુલાકાત લીધી છે। અમે સંકલ્પ લીધો છે આગામી સમયમાં ગોધરા ખાતે ગૌ ધ્વજા સ્થાપિત કરીશું, જે આગામી સમયમાં ગૌરક્ષા માટે લહેરાતી રહેશે। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ગોધરા શહેરમાં મોટી સંખ્યામાં ગાયોનું કતલ થાય છે, જ્યારે ગાયોની ધરતી ગણાતા ગૌધરા ખાતે ગાયોનું કતલ અટકાવવા માટે ગૌ ધ્વજા સ્થાપિત કરીને ગૌ હત્યા અટકાવીશું। इस समय भारत देश के सभी संतों ने, सनातन धर्म के मानने वालों ने एक लक्ष्य हाथ में रखा है, और वो लक्ष्य है अपनी सर्व पूजनीय 33 कोटि देवताओं की अधिष्ठात्री, चलता फिरता हमारा मंदिर गौ माता की रक्षा करना। आज़ादी के पहले से ही इस बात की मांग हम लोग करते रहे, लेकिन 75 साल बीत गए, अभी भी गौ माता की हत्या निरंतर हो रही है, जो कि हम हिंदुओं के माथे पर, सनातन धर्मियों के माथे पे बहुत बड़ा कलंक है। अब हम लोग चाहते हैं कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, तो अमृत दूध देने वाली जो गाय है, कम से कम अब उसकी हत्या बंद कर दी जाए। इसी तरह से कहा जा रहा है कि राम जी को हम लोगों ने बुला लिया है, अब राम आ गए तब तो कम से कम गौ हत्या बंद होनी ही चाहिए। तो इसीलिए गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। तो हमने सोचा कि गौ माता के आंदोलन के लिए गाय की ज़मीन पर, गाय की भूमि पर जाना पड़ेगा, और वो गोधरा है। गाय की जो धरा, उसी का नाम गोधरा। वैसे तो धरा ही गाय का रूप धारण करके आती है, लेकिन यहाँ तो गाय भी है और धरा भी है, इसलिए इस स्थान पर आकर के गौ रक्षा की ऊर्जा प्राप्त करना बहुत आवश्यक था। इसलिए यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ के लोगों से हमने चर्चा की है, और आने वाले दिनों में हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, और हमने ये संकल्प किया है कि यहाँ पर एक गौ ध्वजा, गोधरा में गौ ध्वजा स्थापित की जाएगी, जो यहाँ पर गौ रक्षा के लिए फहरती रहेगी। हमारे गरबी गुजरात की ये जो भूमि है, ये गौ माता को समर्पित है, और इसीलिए प्राचीन काल से इसको गाय की भूमि के रूप में पहचान मिली है। नाम ही है गोधरा, गाय की जो धरा भूमि है वही गोधरा। पावागढ़ से लेकर के और इस तरफ विस्तार जितना है, वहाँ तक गाय माता का चरण स्थान था। निर्भय होकर के वो घूमती थी, और यहाँ पर किसी समय गाय ही गाय थी और कोई नहीं था। लेकिन जब से लोगों को ये ध्यान में आया कि गाय अगर रहेगी तो सनातन धर्मी बलवान रहेंगे, इसलिए गाय को समाप्त करना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त करना है, तो तब से लोगों की बुरी नज़र गोधरा पर लग गई। और आज गोधरा पर जितनी गाय काटी जा रही हैं, शायद ही कोई दूसरी जगह पर काटी जा रही हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। तो हम लोग चाहते हैं कि गोधरा में ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारी गौ माता के साथ, इसके लिए गौ ध्वजा स्थापित करके संकल्प लें कि हम कम से कम गोधरा नाम की जो जगह है, वहाँ तो गौ के प्रति अन्याय नहीं होने देंगे, बाकी तो जितना हमारा सामर्थ्य होगा करेंगे ही, लेकिन गोधरा नाम से जो जगह हो, वहाँ पर अगर गौ के साथ अन्याय हो तो ये स्वीकार नहीं।